I think most of the students have joined, right? How many have joined? Can anybody see how many have? So please mute yourself, okay? Because sometimes it's very disturbing if you unmute and talk unnecessarily. If you have queries, then you can unmute and ask question. Okay, so from last class, you have any difficulties or you have any question? নোটবুক বলছি এখানেই তো আমার ওই homework सर हाँ सर आर्किमिडियन प्रॉपर्टी समझा दीजिए फिर से okay Archimedean আছে এখানে কিছু নেই so what is Archimedean property? So I told you when you want to prove something that suppose x number, okay, any x, suppose x positive, so then there should exist one natural number n such that n should be greater than x. This is one. So এটাই হচ্ছে so Archimedean property has various kind of variation of it, okay. So yesterday I wrote one that for all x belongs to R, x positive, and for all তো এটা দিলো তো y বাবা কি belongs বলছে to এটা করা উচিত R. না Who is super? Please mute yourself. For all x belongs to R, x greater than 0, and for all y there x should be 1, n belongs to n, such that nx greater than y. That I have written yesterday, right? Krishna Gupta. Sir, this Yes, while only yes, for positive number. Huh? yes This sir while only for x greater than 0. Which one? Sir, Archimedean professor, you told that if x greater than 0, then always n natural number which n greater than x. So, sir, if x less than 0, then this property is not valid. No, this property is also valid. We'll see. There are various variation of Archimedean property, okay? Okay, sir. Suppose similarly here also you will get, so this property is also valid for this. Even if you x greater not less than 0, this will also hold. So I will write another property, okay? This will also hold. Okay, where x is greater than 0, and for this one x greater than 0 is not necessary. So in many times in mathematics you will see theorems, right? So there are hypotheses of the theorem and the conclusion of the theorem. So in many times you will see that some part of the hypothesis needed to prove the theorem, okay, but it is assumed to prove it in general. Suppose 5 theorem you have to prove and same hypothesis you have given, maybe for some particular theorem some part is not needed in the hypothesis, like that. So Archimedean property has various variation, okay. So Archimedean property is like that, n is unbounded above, okay, that set of natural number is unbounded above. That means for any real number you will get also. So there are various conclusion also of the Archimedean properties. So I told you that if you want to show some limit property, proof, suppose limit n tends to infinity 1 by n is equals to 0, I'll prove it using epsilon n proof, right? So then there you have to use something Archimedean property. So it has various application when you are proving epsilon delta type approach to prove the limit of some functions or sequence. Okay, is it clear? Yes. So doubt getting so Archimedean property, if you check in the book, it has various variation. Okay, 5-6 properties are there. So one can be derived from the other. Suppose here, if you take y is x and x is 1, so you will get n greater than x. Similarly here, so various variation is there. If you take y equals to 1,
then we'll get this property written here. 0 less than 1 by n less than x. That means nx greater than 1. So if you take y equals to 1, you will get it. So various properties can be derived from the Archimedean properties, and all are needed to prove some epsilon delta examples. So we'll see. So yesterday we are talking about also sequence, right? So what do we mean by sequence? What do we mean by sequence? Who is talking again and again? What do you mean by sequence? Yesterday we are talking about, right? Can anyone? Series of number in a definite patterns. A series of numbers. So I told you that. So this is like a mapping from natural number to real number, or you can say that a sequence. So do you know what do you mean by mapping? Do you know what do you mean by mapping? Relation of one set to another set. Yeah, so it's a particular type of. So if you have not studied mapping, then please study it. That if you take map from N to R, if N to C, you will get sequences. And also we can write sequence like a sequence of elements of a space, even like ordered collection. Okay. So A1 will be its first element. Similarly, nth element, right? Now that you have seen this area of the circle and area of the n polygon, right? So what n test wants to know, right? Means the limit of the sequence. What will happen as n tends to infinity? So do you know what do you mean by a sequence is convergent? Yes. So you wants to know that what happens? That the sequence will converge into a finite number. Yes, always it should be some number below r, suppose in the case of real sequence. Yes, sir. Yes, sir. So it should not be infinity or minus infinity. What happens to an as n tends to infinity? This you want to know, right? So when you say that sequence an is converges to some real number, say L, when you say that a sequence. So by the way, this sequence an we denoted by like this way, okay? This notation is clear. Second bracket an and then n greater equals to 1 and start from 1. Okay. So this is different from your, so like this one if you write. Okay, n greater equals to 1. So this is like a set. Okay. So this here we have defined the sequence an. So don't confuse, huh? Is said to be convergent. To some real number L. Okay.
If what should I write? You have studied epsilon delta in the 10th class, right? Calculus course. So what should I write? Similarly, a sequence n is said to converge to some real number L. What should I write? Tell me. Suppose here L is there. Tell me. Just tell me geometrically what should happen. A sequence n is convergent to some real number L if I have already the pictorial description. Be continuous point L, something like that. So here nothing is like graph. It's a sequence. It's a discrete, right? It's not a continuous. It is mapping from natural number to real number. If it maps from real number to real number, something like that, then you will get some function. So have you got it? That what will graph of this sequence? So suppose we are doing some functions part to R. Then we study continuity. This you have already studied, right? Studied or not? Continuity, Yes, limit, all these things you know. Now, in the case of sequence, this mapping is from Natural number to real number. yes. So that means some discrete points. Okay, so it will like you'll get some dot in the real line. You'll get some dot, and you will check what will happen at that dot points 1, 2, 3, 4, and like that, right? Yes. Yeah. So, what will be the definition? If given any epsilon greater than 0, similarly, whatever you have studied, if given any epsilon positive, what should exist? This is very simple. Tell me. L plus E should exist. Huh? L plus C. No. It will always exist, right? If given any epsilon positive, what should you get to convert this an to L? So your goal is that whether limit n tends to infinity, an should goes to L, right? Yes, sir. And then we are saying that if given in epsilon greater than 0, what should exist? Like in the epsilon delta, you have seen that there should exist a delta positive, right? To converge to fx to L. Similarly, here what should happen? What should exist? Tell me. If given any, we can find a natural number, right? We can find a natural number n0. Huh? So already we have written natural number. So then what should happen? Whatever you have studied in epsilon delta, similarly, if we can find a natural number such that, what should happen? We should tell this. This is clear that all these an for some in n0 onwards should lie in this epsilon neighborhood of the L. So this is known as epsilon of L, right? This L minus epsilon, L plus epsilon. And this tail of the sequence, so that is more important. Tail of the sequence, huh? Tail of the sequence. This is it clear to all of you? Is it clear to all of you? Yes, sir. So Yes, it does not matter. Okay, suppose for some 1, 2, 3, 4, 5, what is happening for the sequence A1, it means members of the first n terms, what is happening. So you should always focus on the tail of the sequence, where it is goes. Okay, so that means
for all n greater equals to n0. This is the meaning of the, and you can prove that this, if it is converges, then L should be unique. Okay. So suppose 1 by n sequence should converges to L. How will prove that 1 by n greater than 1 converges to 0? Example 1. How will prove it? So here L is 0, sir. 0, right? And what will be your n naught? The integer n. So let epsilon greater than 0. Okay. Now you have to find a natural number n such that what should happen? So you have to find this n naught, right? How will you find it n naught? So this you want to show, right? For all n greater equals to n naught. That n naught you have to find. So from which relation you can find? From this relation only, right? So what you should choose as n naught? So this is like your 1 by n only, right? And you want 1 by n less than epsilon. So this is your goal, that 1 by n less than epsilon should be verified, right? And how you know that 1 by n should be less than epsilon? From which property? अखिलेश कौन है ये? Okay, guys, tell me how we know that 1 by n should be less than epsilon for some n onwards. I told just 5-10 minutes before that which property you have to satisfy. From which property you can tell that this from some n onwards. Yes. So by Archimedean property, what we can say? What should I choose? So by Archimedean property, so if this holds, then we can say that 1 by n goes to 0, right? For some n, it goes to n naught. If this holds, then we can say that this holds, right? So by Archimedean property, what you can do? So you have to choose one n naught, right? And by Archimedean property, we can get one n naught. Such that what will happen? Such that what will happen? So Get n approaches 0. yeah, so we choose n naught such that tell me, by Archimedean property we choose n naught such that what n naught will satisfy? N naught, you N can naught is see, greater than E epsilon. yes, so n naught epsilon greater than 1, right? So that means Yes. we have choose y equals to 1 and x equals to epsilon. So have you observed? See this one. So here epsilon positive, so x is your epsilon, right? So n epsilon and y is your 1, right? Okay, so this is your n naught and this is epsilon. This is clear? This is clear, all of you? So x is your epsilon and n is your like n naught and y is your 1. Okay, so that means 1 by n naught. So for all n, now for all n greater equals to this n naught, you can see that 1 by this n. So 1 by n, now you can prove, right? 1 by n minus 0, 1 by n, right? So lesser equals to 1 by n naught. And then from this relation, this is less than epsilon. Okay. So for given in epsilon greater than 0, we have found 1 n naught, right? Such that 1 by n minus 0 less than epsilon. So it tends to infinity, 1 by n equals to 0.
Is it clear to all of you? Sir, can you explain once again, sir? Okay. So given epsilon positive, that is given to you, right? That you can choose arbitrary any epsilon positive. Then what you have to find? We have to find one integer n naught such that for n greater than naught of the sequence goes to right. That by n greater equals to n naught should goes to 0. That is your objective, right? Tail of the sequence should goes to 0. To find that n naught, if you can find that n naught such that by n tends to 0, then you are through. So given any epsilon positive, and you have seen that this should be less than epsilon. If you prove that 1 by n less than epsilon, that you have to prove. You want to prove it, right? By finding an integer n naught such that for all n greater equals to n naught, this will hold. By Archimedean property, we know that this relation hold, right? Once this relation hold by Archimedean property, then we know that now what we have to show that 1 by n less than epsilon, that is your goal. So 1 by n lesser equals to 1 by n naught from this relation. Okay, from this relation 1 by n lesser equals to n naught. This is clear, Sir. And now from 1 by n naught is less than epsilon from this relation. 1 by n naught is less than epsilon. That means what you have proved? Given any epsilon greater than 0, you have found one integer n naught such that for all n greater equals to n0, an minus l less than epsilon. So that means limit n to n is l. Is it clear now? Yes, sir. Yeah. So similarly, suppose what will happen with this sequence? Is it convergent? This sequence, is it convergent? Yes, sir, it converges to 0. Yes, sir. Huh? Converges to 0. No, sir. Is convergent or not? No, sir. No, Who is saying converges to 0? sir, I thought you were asking about the last series. Like, No, that is already proved. Now this sequence, and how this sequence looks like? One, infinity की तरफ जा रहा है. 1, 2, 3, yes, 2, 3, infinity. 4, right? So this is one is first element, second sir, element. but the sum of this series will converge to minus 1 by 12, right? That is super sum. Don't focus on this, okay? That is Ramanujan super sum. So you don't worry about all these things. Okay. That Sorry, will sir, come can in you come number again? I theory. couldn't hear you. Huh? That Sir, will can you come in repeat? number theory, okay? Yes, Not sir. needed. Okay, sir. It's not here, okay? Here it's Okay, like sir. sequence is divergent, series will, okay? That is for other purpose, not here. So here we are talking about the sequence n. What will happen when n tends to infinity? So this sequence will convergent or not? I will prove it. I will show that sequence is divergent. Can anyone guess? So you have to find one contradiction, right? Yes, sir. Suppose you choose some that it has some limit, suppose l, okay? Then given any arbitrary positive epsilon, what will happen? That what should it happen? Suppose it is convergent to some number l, then what should happen? Can you tell what should happen? Suppose this converges to some l, then what will happen and how will get the contradiction? The way for the main function to send the message. अरे शुभम क्या कर रहे हो तुम? What should happen? Suppose this n should converges to l, then what should happen? That Limit infinity does not exist, sir. so you have second, suppose
n is convergent to suppose converges okay, then choose epsilon equals to 1, right? Then you will get this one. That means what should happen? This should happen or not? Yes, This should sir. happen if it should converge to L. Yes, sir. What should be the contradiction? Element, Huh? And what is the contradiction? And then where is the contradiction? L is not constant. That is contradiction. So this n, this what is this n? What is this n? This n is comes from natural number, right? These n's come from natural number, and you are saying that for all n, this any n not, this natural number is bounded by this epsilon that one neighborhood of L. And is this possible? Because you know that n is always greater than x, right? So this relation does not hold. So this contradicts Archimedean property, right? So it's not convergent, right? So that means this is divergent. Is this clear? Yes, sir. So give on another example, but the sequence is divergent. Can you give some example? Sir, what is X here? Huh? What is X here? X. Which one? So Sir, this this is it a is number? no. This is for any real number by the Archimedean property. There exists one n, right? Such that n greater than x, right? But this is violating or not? So this natural number it can be bounded by some real number. Huh? Yes, sir. So it cannot be bounded by some real number, right? Yes, sir. So L is your fixed, and you're saying that for all n greater than equal to n not this natural number is bounded by some real number. No, because again you will find some another n which is bigger than that n, right? Suppose L is your 50, then you will get one n that is 52, and this violates that n should be less than 51. It's not right, right? So n is unbounded above, right? And you are saying Sir, that sir, could you please explain the whole concept briefly in Hindi again? in Hindi, which concept? So this Archimedean property and everything. Okay, I don't have that much time now, So but I just a can. Okay. brief description. So हाँ, so तुम्हारा आर्किमीडियन प्रॉपर्टी क्या है? आर्किमीडियन प्रॉपर्टी एक्चुअली है क्या बताओ? कि तुम्हारा जो नेचुरल नंबर है वो तुम्हारा क्या होगा? कोई भी एक रियल नंबर, अगर कोई भी एक रियल नंबर है तो उससे नेचुरल नंबर मिलेगा जो है ना, यहाँ से क्या कोई भी एक रियल नंबर है, this is like there exist and this is like for all, for any real number. कोई भी रियल नंबर है
तो उससे एक नेचुरल नंबर जो उससे बड़ा है ये मिलेगा। ये तुम्हारा आर्किमिडियन प्रॉपर्टी है। उसी Yes, को sir. यूज करके हमने एप्सिलॉन जो एन है, जो पहले जो एप्सिलॉन डेल्टा पर एप्सिलॉन डेल्टा पढ़े हो ना, that given any epsilon positive Yes, sir. there exists delta, right, such that fx minus l less than epsilon मिला था ना, जहाँ पे तुम्हारा x minus a less than delta था, ठीक है? Yes, sir. So but here we are taking sequence, right? So here we are taking sequence, right? a1 a2 an plus 1, and what will happen when n tends to infinity? Earlier you have want to know that what will happen when x tends to a, what should happen with this one, whether it will goes to l. Then in continuity you have checked whether this will is equals to f of a. That is separate story. But similarly here you want to check, since it is whether, तो तुम्हारा जो a1 a2 a2 a3 a4 a5 ये जो सीक्वेंस है ये l पे कॉन्वर्ज होगा कि नहीं होगा, ये चेक करना है। तो तुमको क्या बोला कि a1 a2 ये सपोज सम फाइनाइट अप टू दिस, कोई भी नंबर n नॉट के लिए ये क्या हो रहा है इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है हमें। हमको किससे फर्क पड़ना चाहिए? टेल ऑफ द सीक्वेंस के लिए। इसके लिए क्या होगा वो हमको देखना है कि ये तुम्हारा ये जो टर्म है ये क्या होना चाहिए। अगर एल पे कॉन्वर्ज होना चाहिए तो क्या होना चाहिए? एल माइनस इप्सिलॉन इस नेबरहुड में होना चाहिए, टेल ऑफ द सीक्वेंस। तो इससे हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है ये कहाँ पे जा रहा है, यही फर्क पड़ना चाहिए। हाँ Okay, sir. ठीक है। तो उसी को प्रूव करने के लिए आर्किमिडियन प्रॉपर्टी का यूज किया है, जो तुम्हारा रियल नंबर का प्रॉपर्टी है। और भी रियल नंबर का बहुत सारे प्रॉपर्टी था, एल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज था, ऑर्डर प्रॉपर्टीज था, जो लास्ट क्लास पे किए थे। हाँ Yes, sir. और कौन सा प्रॉपर्टी था? डेंसिटी प्रॉपर्टी था, that for any two real numbers there exists one rational number in between them, there exists one irrational number in between them। अगर तुम्हारा दो रियल नंबर है तो उसके बीच में एक रेशनल नंबर मिलेगा, इसका एक इरेशनल नंबर मिलेगा। सपोज एक्स वाई टू रियल नंबर है, so there exists one q suppose belongs to q such that x less than q less than y। ठीक है, इस तरह डेंसिटी प्रॉपर्टी पढ़े थे पहले, बाद में बताएंगे वो कौन सा प्रॉपर्टी I told you that last class that will the next what, can anyone guess? Can anyone guess what is that property? Completeness property, right? So what do you mean by completeness property? तुम लोग को कोई भी सीक्वेंस है तो उसका लिमिट प्रूव कर सकते हो ना अभी? Sir, no gap in graph. हाँ नो हाँ देयर इज नो गैप इन सपोज इन रियल नंबर। सो उसी का ही कुछ डिफरेंट वेरिएशन है मैथमेटिकली। सारे रियल लाइन पे सारे रियल नंबर्स आ जाते हैं, इसी का मतलब है हाँ completeness हाँ property। हाँ every non-empty subset of R so here R means the set of real number, right? Every non-empty subset of R that has an upper bound क्या होना चाहिए उसके बाद? lower has
least upper bound. Have you heard about least upper bound? No, sir. नहीं सुने हो? कौन सुने हैं? नहीं सुना सर. Okay, so every non-empty subset of R that has upper bound means this is bounded above. Okay. बता रहा है क्या है? कोई नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ R है, ठीक है? तो R का कोई भी एक नॉन एम्प्टी सबसेट एग्जांपल बता सकते हो? सपोज एब्स्ट्रैक्ट पोएम में लिख रहे हैं, हाँ, S is a non-empty subset of R, ठीक है? एब्स्ट्रैक्ट पोएम में सपोज S is bounded above. Then what do you mean by completeness property? That S has a least upper bound. तो नाम से पता चल रहा है कुछ? What do you mean by some subset is bounded above? सर कोई सबसे छोटा नंबर होगा रियल नंबर में जिसके सेट में जो इस सेट में सबसे बड़ा नंबर होगा. Suppose we will say that S is bounded above if suppose S is a non-empty subset of R and S is bounded. So I have just so this is bounded like bounded. Okay, I have just written in abbreviation. S. If what should I write? If S is an upper bound, what do you mean by upper bound? बताओ. So a real number U is said to be an upper bound of S. A real number U is said to be an upper bound of S if X lesser or equals to U. For all X. क्लियर है? For all X. Yes, sir. क्लियर है? Similarly लोअर बाउंड, लोअर बाउंड क्या होगा? लोअर बाउंड के लिए और एक नंबर बोलो, सपोज L. L तुम्हारा है सर एक बार कर दीजिए. हाँ, तो सपोज तुम्हारा यहाँ पे सेट का सारे एलिमेंट, ठीक है? ठीक है, तो सपोज यहाँ पे तुम्हारा U है, एक बाउंड है, हाँ, यहाँ पे सारा S एलिमेंट है, सपोज सेट है एक रियल लाइन में जो साफ बार है, ये एक सेट है, यहाँ पे सारे एलिमेंट S का यहाँ पे है, ठीक है? सपोज इस साइड में तुम्हारा L होगा कोई, हाँ. अभी क्या बोल रहा है कि ये रियल U is said to be an upper bound of S. तो X का जो जितना सा एलिमेंट है S का, वो U से छोटा होना चाहिए, ठीक है? एलिमेंट ऑफ U S should be less to U. छोटा चाहे इक्वल उससे हो, हाँ, तो U is said to be an upper bound. सिमिलरली लोअर बाउंड क्या है? उस लोअर बाउंड से सारे एलिमेंट बड़ा होगा, नहीं तो इक्वल होगा, ठीक है? All the element in the set should be either greater than L or equals to L. Then L is said to be lower bound, ठीक है? सपोज ये तुम्हारा एक सेट है, सपोज 1, 1/2, 1/3, 1/4. तो ये सेट का तुम्हारा अपर बाउंड क्या है? Sir, 1. Yes. So all the element you can write that in this set, right? What is the lower bound? Sir, 1/4. नहीं लोअर, ये तो चल रहा है. So 0. Zero. हाँ, zero is the lower bound, right? But lower bound does not belongs to, right? तो ये बाद में आएगा कि सपोज इस तरह कोई एग्जाम में आके एक सेट बताओ जिसका लोअर बाउंड सेट में नहीं है,
तो एक एग्जांपल है, यहाँ पे हमारा लोअर बाउंड है, ठीक है, जो उस सेट में नहीं है, ठीक है। तो अभी तक अपर बाउंड, लोअर बाउंड, बाउंडेड अबव, बाउंडेड बिलो क्लियर है? सर Yes, sir. वो लिस्ट अपर बाउंड समझ में नहीं आया। हाँ, वो उसको बताया, अभी तो बताया नहीं ना, तो ये यहाँ तक क्लियर है ना? यस सर। हाँ, तो अभी क्या है देखो, अगर u एक अपर बाउंड है तो u+1 भी एक अपर बाउंड है। अगर सारा एलिमेंट u से छोटा है तो u+1 से भी छोटा है, ठीक है, u+2 से भी छोटा है, इस तरह। तो सबसे जो छोटा एलिमेंट मिलेगा जिस यहाँ पे, वो तुम्हारा क्या है, लिस्ट अपर बाउंड है, ठीक है। तो देखो सारा एलिमेंट अगर u से छोटा है तो u+1 से भी छोटा है, ठीक है, u+2 से भी छोटा है ना। What to find some number which is less than every other upper bound, ठीक है, then that number will be called least upper bound। क्लियर नहीं है? जिसको बोलते हैं सुप्रीमम। सर एग्जांपल। हाँ, एग्जांपल यहाँ पे दे रहे हैं, सुप्रीमम इसी एग्जांपल से होगा। हाँ, और लिस्ट अपर बाउंड, ठीक है। तो सुप्रीमम और लिस्ट अपर बाउंड क्या बोला, बोलो? एन अपर बाउंड ऑफ एस, क्या लिखना चाहिए? एन अपर बाउंड ऑफ एस। ये तो क्लियर है ना, मीन्स यहाँ पे जो ग्राफ में e+3 उसमें आ रहा है। तो दिस LUB मीन्स लीस्ट अपर बाउंड, ओके। LUB means least upper bound, and upper bound of S is said to be an it is less than every other upper bound, ठीक है। तो जो फर्स्ट अपर बाउंड है वही तुम्हारा सुप्रीमम है, ठीक है। तो सपोज यहाँ पे 2 भी एक अपर बाउंड होगा, ये सारा एलिमेंट का है ना। इस एग्जांपल में 2 भी एक अपर बाउंड होगा, 3 भी एक अपर बाउंड होगा कि नहीं होगा? सर वैसे तो सर कुछ भी हो सकता है जो भी 1 से बड़ा हो, एक अपर बाउंड। हाँ, लेकिन वी हैव टू फाइंड द लिस्ट अपर बाउंड। सर लेकिन वो तो सेट कहाँ है ना। हाँ सर जो जैसे कि आप बोले कि वो यहाँ पे 2 भी एक अपर बाउंड हो सकता है, 3 भी एक अपर बाउंड हो सकता है। हाँ सर वो तो सेट के बाहर है। हाँ, तो सुनो अभी ये समझ में आया, वो सेट के बाहर वाला बाद में आ रहा है। अभी ये समझ में आया है कि कोई भी एक अपर बाउंड है तो उससे और भी कुछ बड़ा लोगे तो वो भी अपर बाउंड होगा, बट वी हैव टू फाइंड द लिस्ट अपर बाउंड, दैट इज सुप्रीमम, ठीक है। अगर वो सुप्रीमम, अगर जो बोल रहे हो, अगर वो सुप्रीमम अगर सेट में बिलोंग करेगा, फिर यहाँ पे लिख रहे हैं, हाँ, इफ this list upper bound belongs to S, then what should happen? Then it is known as maximum, ठीक है। अगर लिस्ट अपर बाउंड बिलोंग्स टू S, देन मैक्सिमम ऑफ द सेट, ठीक है। क्लियर है? तो ये जरूरी नहीं है जो तुम्हारा लिस्ट अपर बाउंड हमेशा सेट पे बिलोंग, ठीक है। एक एग्जांपल बताओ, जैसा सपोज ये एक एग्जांपल, हाँ, x बिलोंग्स टू Q स्क्वायर 2, ठीक है। बताओ इसका अपर बाउंड क्या है? एक अपर बाउंड बताओ, एक अपर बाउंड बताओ। 2, यस, 2 इज एन अपर बाउंड। लिस्ट अपर बाउंड क्या है? सर 3 होता है। अरे 3 भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता अपर, ठीक है। 2 इज एन अपर बाउंड है कि नहीं है? हाँ यस सर। हाँ, उससे बड़ा भी तो होगा, बोला ना। अगर 2 है तो 2 प्लस एप्सिलॉन भी होगा, ठीक है। अभी एप्सिलॉन कुछ भी लो तुम, ठीक है। लेकिन लिस्ट अपर बाउंड क्या है? 2. लिस्ट अपर बाउंड, लिस्ट अपर बाउंड क्या है? √2 लिस्ट अपर बाउंड है, बट √2 लिस्ट अपर बाउंड, बट
डज नॉट बिलोंग्स टू द सेट एस। क्लियर है ये? Yes, यस सर, रूट टू ही क्यों? हाँ, सर रूट टू ही क्यों? लिस्ट स्क्वायर अपर बाउंड क्या होगा फिर? यहाँ पे लिस्ट अपर बाउंड क्या होना चाहिए बताओ? लिस्ट अपर बाउंड का मीनिंग क्या है? कोई भी अपर बाउंड लोगे, ठीक है, तो इससे बड़ा हो जाएगा। लिस्ट अपर बाउंड का मीनिंग क्या है? कोई भी अपर बाउंड लोगे तो इससे बड़ा हो जाएगा। दैट मीन्स ये सबसे छोटा अपर बाउंड है। हाँ यस सर। क्लियर है कि नहीं है? इफ इट इज लेस देन एवरी अदर अपर बाउंड, दैट मीन्स कोई भी अपर बाउंड लोगे तो इससे क्या हो जाएगा? कोई भी अगर अपर बाउंड लोगे तो क्या हो जाएगा? लिस्ट अपर बाउंड से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, यस सर। कोई भी अपर बाउंड लोगे तो लिस्ट अपर बाउंड से बड़ा हो जाएगा, और लिस्ट अपर बाउंड सबसे छोटा अपर बाउंड है। क्लियर है ना? yes sir, और तो सेट का लिस्ट अपर मैक्सिमम भी है। बाउंड हाँ हमेशा डज नॉट बिलोंग्स टू द सेट एस, बट इफ इट बिलोंग्स टू देन विल से दैट सुप्रीमम इज नथिंग but like your maximum. Similarly, infimum and greatest lower bound will come. Infimum, greatest, greatest lower bound. ठीक है, सिमिलरली यू कैन राइट, हाँ, ये पिक्चर में, ठीक है, यहाँ पे सपोज एल है, यहाँ पे तुम्हारा एल -1 है, ये सारा है, हाँ, तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी सिमिलरली यू कैन राइट। बोलो, और किसी को कुछ डाउट है तो सिमिलरली इरेशनल नंबर के लिए भी सेट लिख सकते हो। ठीक है, सपोज एक सेट लिखा -√2/n, ठीक है, जहाँ पे n तुम्हारा नेचुरल नंबर है। हाँ, Least upper bound no need to be present inside the set SFR. yes. If that belongs to, then it will say maximum. Okay, so that is the beauty of the supremum or infimum. Okay, supremum and infimum belongs to the set S, but if they belongs to set S, then we'll call supremum or as a maximum minimum. ठीक, supremum is least upper bound or main to the set S. If it is supremum, your maximum basically. Maximum is to the set S. When that your least upper bound does not belongs to, just will note that as a supremum. Okay? Any other doubt? So, what is that least upper bound here? -√2. -√2. Least upper bound says 0. -√2. क्या है? सर -√2 नहीं, least upper bound क्या है बताओ? So least upper bound should be 0. Yes, least upper bound should be Because 0. उससे ज्यादा आएगा ही नहीं सर इसका वैल्यू। हाँ, सर अपर बाउंड में 0 होगा जब n की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी तो। हाँ, तो सर But- इस सेट का अपर बाउंड ना 0 होगा। अरे वही तो बता रहे हैं, लिस्ट अपर बाउंड क्या है, अपर बाउंड, लिस्ट अपर बाउंड क्या है इसका, ये सेट का लिस्ट अपर बाउंड क्या है? 0 होगा सर। अपर बाउंड तो कुछ 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता हाँ, 0 है लिस्ट अपर बाउंड, बट दैट डज नॉट बिलोंग्स टू द सेट एस। ये सबको क्लियर है? ये 2 एग्जाम्पल, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल बुक में है, ट्राई करना। अगर नेक्स्ट वीक और भी तुम लोग को ट्यूट में बहुत सारे एग्जाम्पल देंगे, नेक्स्ट वीक तुम लोग को ट्यूट भी कराएंगे। अगर किसी को थोड़ा कम समझ में आ रहा है तो डोंट टेक टेंशन। हाँ, जस्ट है। सर इसका इन्फिमम -√2 होगा क्या? हाँ, यस, इसका इन्फिमम -√2 होगा क्या? yes, when we'll study infimum we'll see. Okay, now you can Sir. see, right? Yes, पहले एग्जांपल में अगर x लेस देन 2 लेंगे तो 2 ही लोअर अपर बाउंड होगा क्या? कौन सा? पहले वाले एग्जांपल में अगर x लेस देन 2 लेंगे तो 2 ही लोअर अपर बाउंड होगा क्या? x लेस देन 2, yes, हाँ, थैंक यू। ठीक है, तो तुम लोग को बोला, ठीक है, तो दैट मीन्स कोई भी और एक अपर बाउंड 2 से बड़ा हो जाएगा।
ठीक है, और एक प्रॉपर्टी बाद में कराएंगे, तो मे भी तुम लोग का थोड़ा जो कॉन्फ्यूजन है, सपोज एम तुम्हारा सुप्रीमम ऑफ एस है, ठीक है, उसका मीनिंग क्या है, अभी तुम लोग का क्वेश्चन क्लियर रहेगा। और N is upper bound होगा। that means for any element in the set S we'll write that x should lesser equals to capital M। ये सबको क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Then what else we can write? अगर m से कोई भी एक छोटा लोगे, m से थोड़ा छोटा लोगे तो क्या होगा, बोलो। वो नंबर सेट में एग्जिस्ट करेगा। हाँ, फॉर ईच एप्सिलॉन 0 there exists one element y जो एप्सिलॉन के ऊपर डिपेंड करेगा, हाँ, इन एस सच दैट क्या होना चाहिए, ये सबको क्लियर है? अगर m से कोई भी एक छोटा लोगे तो उससे एक बड़ा एलिमेंट वो सेट पे मिल जाएगा, ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, ये क्लियर है ना? तो m Yes, तुम्हारा sir. सुप्रीमम ऑफ एस है, ठीक है? Yes. अगर उससे थोड़ा भी छोटा लोगे तो उससे एक बड़ा एलिमेंट उससे मिल जाएगा, ठीक है? तो m तुम्हारा लोएस्ट अपर बाउंड है, ठीक है? Yes, sir. Supremum. सिमिलरली इन्फिमम के टाइम इन्फिम, तो इन्फिमम का भी सिमिलरली डेफिनेशन लिख सकते हो, ठीक है? तो आज क्लास में तुम सीक्वेंस का लिमिट प्रूव कर सकते हो, है ना? अभी तक नेक्स्ट क्लास में मोनोटोन सीक्वेंस क्या है, सीक्वेंस सिमिलरली सीक्वेंस बाउंडेड अबव बाउंडेड बिलो क्या है, जैसा सेट बोला ना, बाउंडेड अबव क्या है, सेट बाउंडेड बिलो क्या है, सिमिलरली फॉर सीक्वेंस आल्सो सेम डेफिनेशन, हाँ, ठीक है? यू हैव अनदर क्लास नाउ? Yes, sir. Sir. सर वो मैथ्स का बुक नहीं पता चला सर, किससे कोई अरे टॉपिक रीड कितने करें। बार बताया काल, तो तुम लोग को मेल फेल भेजने का जरूरत नहीं है, तुम लोग को सब भेज देंगे, नेक्स्ट वीक ट्यूट भी होगा, ठीक है? इस हफ्ते तो कोई ट्यूट नहीं है, फर्स्ट वीक है, अभी तो ज्यादा क्लास हुआ नहीं है, तो हर जगह सेकेंड वीक से ट्यूट होता है, तो तुम्हारा नेक्स्ट वीक ट्यूट भी होगा, ठीक है? तो थॉमस कैलकुलस का बुक देख सकते हो, हाँ, ठीक है? सर, हाँ सर, सर जो मेल पे जो नोट्स और जो रिकॉर्ड वीडियो आती हैं, हाँ, वो फोन पर खुलती नहीं है सर। अच्छा, तो ठीक है, अभी बुक पढ़ो, और हम तो एक्स्ट्रा क्लास भी लेंगे अगर तुम लोग का जरूरत होगा, मत लो, हाँ, अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है? अगर किसी को सर हमको डाउट बुक का होगा, नाम नहीं पता है कि कौन कौन सा बुक पढ़ना है, जैसे थॉमस कैलकुलस अभी आप बताओ, और हाँ, और बटल सेलवर्ट भी बताया था, रियल एनालिसिस। अरे पहले एक बुक तो अच्छे से पढ़ो। सर शायद हम उस उसमें क्लास में नहीं होंगे या लेट आए होंगे, एक भी बुक का नाम नहीं पता है, कोई अगर किसी को पता है तो भाई बता दो। हाँ, कोई टेंशन नहीं लेना है, रियल एनालिसिस ये पहले सर ये स्टार्ट दो किससे करे, कौन सा बुक से पहले? तुम थॉमस कैलकुलस से करो, ठीक है? ठीक है Topic, सर। sir. टॉपिक यही बोला ना, तुम्हारा रियल नंबर का प्रॉपर्टीज है, लिस्ट अपर बाउंड है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, सुप्रीमम है, इन्फीमम है, जो भी तो सेम है, कॉम्प्लीटनेस ठीक है, सर. प्रॉपर्टी है। उसके बाद क्या प्रॉपर्टी पढ़े हो, डेंसिटी प्रॉपर्टी है, ठीक है, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी है, तो बुक देख तुम्हारा मिल जाएगा, इसमें कहाँ है, और कीवर्ड सर्च करोगे तो बुक में मिल ही जाएगा, ठीक है? सीक्वेंस ठीक है, सर. सीक्वेंस का लिमिट, हाँ, फिर तुम्हारा सर एक कुछ और क्या नाम प्रॉपर्टीज, बताए, बटर? बटल एंड सेलवाट, बटल है, टेंशन मत लो, ठीक है? इस तरह प्रॉपर्टी बाद में फिर देखेंगे, ठीक है? अभी और नहीं लिख रहे हैं। सपोज इफ फॉर एनी ए बिलोंग्स टू आर, ये सब ट्रिवियल प्रॉपर्टी ये प्रूव कर सकते हो, जो तुम्हारा अभी तक जो पढ़ा है उससे सारे प्रूफ हो जाएगा, हाँ, सच दैट जीरो, ये आएगा फॉर एवरी, तब यहाँ से क्या डिराइव कर सकते हो, इफ ए बिलोंग्स टू आर, ठीक है, such that 0 lesser equals to a less than epsilon for epsilon, from here you can derive that a should be equals to 0। ये सब छोटा छोटा प्रॉपर्टी है, से यूज होगा, ठीक है? लिमिट प्रूफ के टाइम ये सब किए थे, मैं भी भूल गया हो, तो ये प्रॉपर्टी पढ़े उसी का एप्लीकेशन, ठीक है? Suppose a is greater than 0, then what will happen? So you will get a